me Shobu and welcome back to my YouTube channel, and in today's video I'm gonna do this makeup look, super bronzy glam look. I love the way it turned out. बहुत hot and classy लग रहा है and this is my personal favorite look आज तक जितने भी मैंने makeup look किए हैं. So yeah, without further ado, let's get started with the video. Okay, so I start off with moisturizing my skin, and I'm using this night cream as a moisturizer. So always moisturize your face before using any makeup product. You can skip your primer but never skip your moisturizer because otherwise आपकी foundation cake कर देगी. After that I'm using my all time favorite concealer and I'm applying it all over where I have dark circles and pigmentation, and कहीं जहाँ पे डार्कनेस है वहाँ पे मैं कंसीलर लगा रही हूँ. एंड ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से आई एम गोना ब्लेंड माई ऑल द कंसीलर. सो नेवर ड्रैग योर कंसीलर, बस आपको उसी जगह में डैब डैब करके करना है. और या नेवर ड्रैग योर कंसीलर. And after that I'm using this Maybelline Super Stay foundation for the first time. I took only one pump of this foundation and oh my god, this foundation is so good. The way it blend on my skin, because मैं foundation में like serum add कर दी हूँ, but this foundation is so good without serum. ये बहुत अच्छे से blend हुआ. And after that I'm using my Fit Me loose powder to set my face. ओके, तो अब हम करेंगे एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी आई शेडो पैलेट एंड उससे मैंने ब्राउन शेड दिया है एंड मैं उसका शेड अपने आउटर कॉर्नर में प्लेस करके उससे अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ. टेक योर टाइम एंड ब्लेंड. बहुत अच्छी आई शेडो है बट थोड़ी सी पाउडरी है. एंड आफ्टर दैट आई एम टेकिंग लिटिल डार्कर ब्राउन शेड एंड उससे मैंने फिर से आउटर कॉर्नर में प्लेस किया है. बट दिस शेड इज़ टू पिगमेंटेड बिकॉज ऑफ द कैमरा. ये अच्छे से नहीं दिख रहा बट शेड इज़ वेरी पिगमेंटेड, तो मैंने थोड़ा सा लिया. एंड आफ्टर दैट मैंने उससे लाइट कलर लेके उससे एक फ्लफी ब्रश से ब्लेंड कर लिया जितने भी शार्प लाइन थे. एंड आफ्टर दैट आई एम टेकिंग दिस मेटालिक ब्राउन शेड और उसे मैंने अपने आईलिड पे लगा लिया. सो ये आई लुक मैं सारे कॉरल ब्राउनिश शेड में यूज़ कर रही हूँ. सो एंड आफ्टर दैट टू ऐड लिटिल शाइन मैंने फिर से थोड़ी सी लाइट गोल्ड कलर ली एंड अपने आईलिड पे लगा लिया. एंड आफ्टर दैट आई एम यूजिंग अगेन अनदर स्विस ब्यूटी पैलेट एंड आई डिड माई आईब्रोज. ओके, सो नाउ काजल से आई एम डूइंग माई लाइक आईलाइनर थिंग एंड फिर मैं उसे ब्लेंड करके एक विंग आईलाइनर जैसा बना दूँगी. So if you are someone who don't like to wear eyeliner, then आप ये काजल वाली स्टेप कर सकते हो. बहुत अच्छे से लुक आएगा. एंड आफ्टर दैट मैं अपने पूरे आँखों पे काजल लगा लूँगी. ओके, so after that I'm gonna take my flat thin brush and उससे मैं काजल को blend कर रही हूँ and see how I do my wing. And if you are someone who don't like or don't know how to like apply eyeliner, then this is perfect way you can do and avoid eyeliner, because I personally always messed up with eyeliner and spoil my whole makeup. And so yeah, so after that I'm using this spongy brush and blend my kajal, and I'm taking this brown shade like to do like hold the वाटर लाइन थिंग कि उससे थोड़ी सी स्मोक इफेक्ट आए और ऊपर का नीचे का साथ साथ लगे, अलग अलग ना लगे. एंड आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस मॉफी पैलेट की आई शेडो ब्राउन शेड लेकर अपने फेस को ब्रॉन्ज कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट हैव एनी ब्रॉन्जर. एंड चीक्स के बाद आई एम कॉन्टोरिंग माई नोज बिकॉज माई नोज इज सुपर फ्लैट एंड टाइनी. सो थोड़ा शेप देने के लिए आई एम कॉन्टोरिंग इट. एंड आफ्टर दैट आई एम यूजिंग माई मस्कारा. सो मैं फॉल्स लैशेस लगाने वाली हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा मस्कारा लगा रही हूँ.
and also applying it over my waterline lashes. Okay, so after that I'm taking my favorite Maybelline matte creamy matte lipstick in the shade Nude Nuance, and उसके बाद मैं ले रही हूँ highlighter in color की. So the shade is too wide and I think I should pick another shade, but it's okay, अब आ गई है. So yeah guys, eyelashes लगाने के बाद I'm ready and this is the look that I create. Super bronzy and cute and sexy. So I personally love it, the way it turned out. It looked amazing. So yeah guys, this is the end of today's video. I really hope you enjoyed the video. So I'll see you in my next video. Till then, stay happy.